बच्चों आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे. मैनी ऑफ यू मे हैव एक्सपीरियंस ऑफ बैलेंसिंग योर नोटबुक ऑन द टिप ऑफ अ फिंगर. Figure 7.24 illustrates a similar experiment that you can easily perform. Take an irregular shaped cardboard having mass m and a narrow tipped object like a pencil. You can locate by trial and error a point G on the cardboard where it can be balanced on the tip of the pencil. करके देखना इस एक्सपेरिमेंट को, ये हो जाएगा बहुत अच्छे से. आप उसको बैलेंस कर लोगे एक पर्टिकुलर पेज पे. The cardboard remains horizontal in this position. This point of balance is the center of gravity or CG of the cardboard. The tip of the pencil provides a vertically upward force due to which the cardboard is in mechanical equilibrium. As shown in figure 7.24, the reaction of the tip is equal and opposite to mg. जो कहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है mg, ये देखो नीचे की तरफ. और जो रिएक्शन आपने लगाया ना, नॉर्मल रिएक्शन, वो किस तरफ है? अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस. mg नीचे की डायरेक्शन में कार्डबोर्ड का वेट, और जो r है वो ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि आपने पेंसिल पे सपोर्ट दिया है ना उसको. इट इज़ एक्टिंग फोर्स ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन. जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो ये कार्डबोर्ड जो है ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है, ये बैलेंस्ड पोजीशन में आ जाता है. इफ़ इट वर नॉट सो, ड्यू टू द अनबैलेंस्ड टॉर्क इट वुड टिल्ट एंड फॉल. देयर आर टॉर्क्स ऑन द कार्डबोर्ड due to the forces of gravity like m1g, m2g, etc. acting on the individual particles that make up the cardboard. है ना, टॉर्क है ना ग्रेविटी के कारण. The CG of the cardboard is so located that the total torque on it due to the forces m1g, m2g, etc. is 0. Understood? If Ri is the position vector of the ith particle of an extended body with respect to its CG, center of gravity, then the torque about the CG due to the force of gravity on the particle is torque I is equal to Ri into mig. Torque का formula है ना, position vector into m. The total gravitational torque about the CG is 0. m1g actually force sorry, m1g torque is equal to r into mg. Force है. The total gravitational torque about the CG is 0. Torque G is equal to summation of torque I is equal to summation of Ri into mig is equal to 0. We therefore define the CG of a body. कैसे डिफाइन कर सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को? इट इज़ द point where the total gravitational torque on the body is 0. We notice that in equation 7.33 g is the same for all the particles. है ना, क्योंकि छोटा है ना आपका ऑब्जेक्ट, इसलिए g उसमें सब जगह सेम है. And hence it comes out of the summation. This gives g is non-zero. Summation of miris should be equal to 0. Remember that the position vectors Ri are taken with respect to CG. Now, in accordance with the reasoning given below, ये equation 7.4a in section 7.2, if the sum is 0, the origin must be the center of mass of the body. Thus, the center of gravity of the body coincides with the center of mass इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी और ग्रेविटी फ्री स्पेसेस. अगर ग्रेविटी फ्री स्पेसेस है ना तो जी हर पार्टिकल का सेम होगा. ऐसी सिचुएशन में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ मास से कोइंसाइड कर जाएगी. ओके, वी नोट दैट दिस इज़ ट्रू बिकॉज द बॉडी बीइंग स्मॉल जी डज नॉट चेंजेस. ये दूसरा तरीका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाने का. इसमें आपने हैंग किया है ना, ऊपर से हैंग करोगे किसी ऑब्जेक्ट को, और अगर वो बैलेंस हो जाता है तो इसका मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन और लोअर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स जो हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. CG vary from one point of the body to the another point. If the body is so extended that G varies from
part to part of the body, then the center of gravity and center of mass will not coincide. Basically, the two are different concepts. The center of mass has nothing to do with the gravity. आपने देखा था ना, सेंटर ऑफ मास तो क्या है, ऐसा माना, वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है जहाँ ऐसा माना जाता है कि पूरे बॉडी का मास जो है वहीं पे कॉन्सेंट्रेट है. इट डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी. कौन? Center of mass depends on only on the distribution of mass of the body, but center of gravity depends on the gravity. In section 7.2, we found out the position of the center of mass of several regular homogeneous objects. Obviously, the method used there gives us also the center of gravity of these bodies if they are small enough. Figure 7.25 illustrates another way of determining the CG of an irregular shaped body like a cardboard. If you suspend the body from some point like A, the vertical line through A passes through the CG. We mark the vertical A dash. If then suspended the body through other points like B and C, the intersection of the verticals gives CG. Explain why the method works. Since the body is small enough, the method allows us to determine also its center of mass. क्योंकि for small bodies, center of mass coincides with center of body.